So we start doing the last section, which is macromolecules. Macromolecules are basically um, the the larger molecule made up of from smaller molecules. Okay, so they are basically called the polymers, and the process is basically called polymerization. To start with the basic definition of polymerization. The basic definition is simple. It is the process by which two or more smaller molecule join together to make a macromolecule. Okay, so the definition is quite simple. The joining up of two or more smaller molecules, and these smaller molecules are called monomers, to make a macro का मतलब होता है larger. ठीक है, molecule, and this is called polymer. ठीक है बेटा, there are two types of polymerization. Number one is called addition polymerization. पहले हम इसे कवर अप करेंगे. And number two is called condensation polymerization. ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन polymerization. ठीक है, तो joining up of two or more smaller molecule to make a macromolecule or a larger molecule is basically called polymerization. There are two types of polymerization. One is called the addition polymerization. The second one is called condensation polymerization. Addition polymerization से start करते हैं. देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए देयर इज अ बेसिक कंडीशन. दिस इज ओनली इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल. ओनली इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होते हैं दे ओनली अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन. मींस द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन इज बेसिकली कंपल्सरी. ठीक है, it must contain carbon double covalent bond carbon. If you have a saturated molecule, it do not undergo addition polymerization. ठीक है, अगर आपके पास सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, देयर इज नो डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट. ठीक है, तो याद रखिएगा कि द प्रेजेंस ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज कंपलसरी. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देयर आर सम एमसीक्यूज इन व्हिच दे आस्क यू कि which of these molecule can undergo addition polymerization. To make sure that you know that all those molecules that have carbon double covalent bond carbon. ठीक है, अच्छा आप देखिए, this is only carbon double covalent bond carbon. It's not carbon double covalent bond oxygen. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई भी डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इट कैन अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन. लाइक इफ यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड that have carbon double covalent bond oxygen present, it do not undergo addition polymerization. Addition polymerization के लिए कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है. ठीक है, ये की पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम एल्कीन्स का ही जिक्र करेंगे. द जॉइनिंग अप ऑफ टू और मोर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल और टू और मोर एल्कीन मॉलिक्यूल टू मेक अ सैचुरेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल. द जॉइनिंग अप ऑफ टू और मोर unsaturated alkene
molecules to make a saturated macromolecule. ठीक है बेटा, this is basically the addition polymerization. And basically the most common example of addition polymerization, generally this is called basically polyalkenes. ठीक है, जो example है हम उन्हें polyalkenes कहते हैं. तो basically the most common examples are polyalkenes. Polyalkenes का मतलब क्या है? It could be polyethene made up of ethene monomer. It could be polypropene made up of propene monomer, or polybutene. And another common example is basically polyvinyl chloride. ठीक है, जिसको हम नॉर्मली PVC, जो प्लास्टिक होती है ना, PVC पाइप्स होते हैं, दैट्स बेसिकली. All these are the examples, and these are basically commonly called the plastic material. And we know the issue with the plastic. Later on इसे discuss करेंगे आगे. ठीक है, clear beta? Now let's start with the first one, which is polyethene. As I said, the polyethene is made up of ethene monomer. So I guess so ethene monomer क्या होगा? Ethene is C2H4. This is basically ethene. You have carbon, double covalent bond carbon present, and both carbon contain how many hydrogens? दोनों के पास you have two hydrogens present. Clear? So this is basically a monomer. अब देखिए, मोनोमर से पॉलीमर बनाना इंतहाई आसान है. We are taking the n molecules of this. N is the number of molecule. N number of monomers. और आपको पता है कि n की वैल्यू मिनिमम टू मेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉलीमर, नॉर्मली n की वैल्यू जो है वो 10,000 के करीब होती है. Like as minimum you have to take 10,000 of monomer molecules to make a macromolecule. ठीक है. Now from this monomer, let's make a repeat unit. So देखें, these are the two carbons bonded to a double bond. ये दो कार्बन है ना, these are the two carbon bonded to a double bond. हम इन दो कार्बन्स को as it is लिख देंगे. ठीक है, C, और डबल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो दिस इज कार्बन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन. Now, on the first carbon, which is this one, you have two hydrogen atoms are attached. So, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन नीचे. On the second carbon, you have another two hydrogen atoms are attached. So, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाया, एक हाइड्रोजन नीचे. सिर्फ क्या किया है हमने? We shifted the hydrogen above and below these carbons, and we convert a double covalent bond into a single covalent bond. अभी जो double covalent bond है वो यहां से और यहां से चेन को कंटिन्यू करेगा. ठीक है, सो वी पेस्ट अ ब्रैकेट हियर एंड ब्रैकेट हियर, और यहां पर एन लगा देंगे. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रिपीट यूनिट. ठीक है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि द डबल कोवलेंट बॉन्ड कन्वर्टेड टू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, और चेन के साथ लिंक अप हो रहा है. ठीक है, टू मेक अ मैक्रोमोलिक्यूल लाइक अ सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर, आप इसी रिपीट यूनिट को either you write it one time with two hydrogens, or you write it like two times. Minimum you have to show it like two times, or maximum after three times we show कर सकते हैं. 2 to 3 times. It's better if you write it 3 times. ठीक है, so you can see one repeat unit, two carbons, second repeat unit, and then the third repeat unit. ठीक है, now place a bracket और n प्लेस कर देंगे. दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सेक्शन ऑफ अ पॉली, व्हिच इज पॉलीइथीन. देखें, ऑल्दो इसमें कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल
but as it is made up of ethene monomer, that's why, sorry, मैंने ethane लिख दिया, as it is made up of ethene monomer, so that's why it is called polyethene. Polyethene का मतलब बहुत सारे ethene molecule. ठीक है, क्लियर? की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि यू शुड नो दैट हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस. अच्छा देखिए, if you are provided with a chain of these, like if you are provided with a section of a polymer, याद रखिएगा, repeat unit consists of only 2 carbon in this straight chain. ठीक है, this is one repeat unit, this is another repeat unit, and this is another repeat unit. ठीक है, तो याद रखिएगा straight chain में, जो straight chain चल रही है, one repeat unit consists of how many carbon? 2 carbon. So if I have to show the repeat unit, this is basically one repeat unit. ठीक है, is it clear? This is basically one repeat unit. Now let's start with another example. देखें, यहाँ तक अगर आपने notes नहीं लिए हैं तो you can take the screenshot. This is the definition of polymerization and the definition of its addition polymerization basically. ठीक है, आगे गए, and then this is polyethylene. Now I'm giving you one example which is basically polypropene. Let's do another example which is polypropene, and it should made up of propene monomer which is C3 propene propes 3 H6. ठीक है, C3H6, and propene is this one, C, you make this one carbon double covalent bond carbon, CH3, one hydrogen here making 4 valencies of carbon. ठीक है, clear? अच्छा, in a similar way जैसे ऊपर स्क्रीन पर है, can you try to make this thing like monomer के बाद repeat unit, and after the repeat unit make a section of a polymer. चलें try करें. चलें, okay, now you can see these are the two carbons bonded to a double bond. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर repeat unit बनाने के लिए we made these carbons like this. ठीक है, clear? On the first carbon, which is this one, you have one hydrogen and one CH3. तो मैंने इसके एक तरफ CH3 लिख दिया. As I said, you can write CH3 like this. On the other side, you have one hydrogen. Second carbon, which is bonded to a double bond, contains two hydrogens. ठीक है, now एक line extended line यहाँ से बनाएंगे, square bracket, small bracket, and you place n. This is basically the repeat unit of polypropene. Okay, and now you can write this repeat unit like 3 times, 1, 2 times, bracket लगा दीजिए and लिख दीजिए. This is called polypropene. ठीक है, this is called polypropene. Clear beta? So these are the two common example, polyethene, polypropene. They could ask you about the polybutene as well, जो कि difficult नहीं है. So let's try polybutene as well. Butene is C4H8. ठीक है, this is the molecular formula of butene. The molecular formula, you just combine all the carbon, hydrogen and everything. ठीक है, so this is polybutene. Now butene is C double covalent bond, C single. ठीक है, you have one hydrogen, and both of these terminal carbons have 3 hydrogen atoms. ठीक है, this is butene. अगर इसको molecular form में लिखना चाहें तो butene is CH3 CH double bond CH CH3. That's the structure formula of butene. ठीक है, 4 carbon and there's a double
कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मिडिल। डबल कोवलेंट बॉन्ड लास्ट पे भी हो सकता है, मिडिल पे, लेकिन हमारे कॉमनली मिडिल वाली एग्जांपल यूज की जाती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ब्यूट टू इन, वैसे ये ब्यूटीन कहलाता है। ठीक है, नाउ identify the carbons bonded to a double bond. So this is a carbon bonded to a double bond which contain one hydrogen and one CH3. Okay, so मैंने इस कार्बन को लिखा, it contain one CH3 and one hydrogen. The other carbon which is bonded to a double bond contain one CH3, one hydrogen and one CH. उसमें भी एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो हम चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, ठीक है, सो कैन आई से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप हाइड्रोजन यहाँ CH3 यहाँ भी लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो खैर, write it like this to make it simple, and place and this is basically called the repeat unit of, ठीक है, रिपीट यूनिट में आप दोनों कार्बन यानी मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड करके एक दफा लिखेंगे। ठीक है, नाउ सी 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 हाइड्रोजन्स, ठीक है, एंड ऊपर सारे के सारे CH3 आ गए। नाउ सी सी CH3 here, हाइड्रोजन, CH3 here, एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कितने रिपीट यूनिट लिखे मैंने, 1, 2 and 3 रिपीट यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा इस सेक्शन ऑफ पॉलीमर में इट शुड बी आइदर 2 रिपीट यूनिट मिनिमम और 3 रिपीट यूनिट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इन दिस पॉलीमर चेन देयर मस्ट बी ऑड नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी इवन नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने होने चाहिए, इसमें देयर मस्ट बी इवन नंबर ऑफ कार्बन। स्ट्रेट चेन में इवन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ कार्बन क्यों, बिकॉज इफ यू आर शोइंग 2 रिपीट यूनिट देयर मस्ट बी 4 कार्बन, इफ यू आर शोइंग 3 रिपीट यूनिट देयर मस्ट बी 6 कार्बन। स्ट्रेट चेन में अ रिपीट यूनिट इन अ स्ट्रेट चेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। ये जो बैकबोन चल रही है, स्ट्रेट चेन चल रही है, इसमें रिपीट यूनिट में कितने कार्बन होते हैं बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन। तो अगर आप 2 रिपीट यूनिट शो कर रहे हैं तो यू हैव टू शो 4 carbon in a straight chain. I'm not talking about the carbons present above and below these. मैं इन कार्बन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड पॉली ब्यूटी। ठीक है बेटा, अच्छा अब एक काम करते हैं, सेकेंड थिंग इज दैट sometime they give you a section of a polymer and they ask you to write down the repeat unit and a monomer. So I'm giving you, हम स्ट्रेटेजी रिवर्स स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। हम पॉलीमर से जाएंगे रिपीट यूनिट में, polymer to repeat unit to monomer. सही, so I'm giving you a section of a polymer, हम इससे रिपीट यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3। ठीक है, H, ठीक है बेटा, ये एक पॉलीमर है एंड आई एम आस्किंग यू टू गिव द रिपीट यूनिट और अ मोनोमर। रिपीट यूनिट भी बताइए और मोनोमर भी बताइए। देखें बहुत आसान सा काम है, सेलेक्ट एनी 2 कार्बन्स। तो आई हैव सेलेक्टेड दीज 2 कार्बन्स। सही है, अब देखें इन 2 कार्बन से ये जो आया, दिस इज बेसिकली और रिपीट यूनिट। ठीक है, तो अब हम इसे मार्क कर लें, अगर दिस इज बेसिकली द रिपीट यूनिट, any 2 carbon from a straight chain. So this is the repeat unit. I'm just copying this as it is. इसको as it is copy कर लेते हैं। C, here we have Cl, H, C, H, H. Bracket लगा दिया। This is basically the repeat unit of this monomer. ठीक है, बहुत आसान है। Just select 2 carbons
ठीक है, बॉक्स बना लीजिए पेंसिल से, एग्जाम में भी आप ऐसा करेंगे, ठीक है, एंड देन राइट इट एज इट इज विद दिस ब्रैकेट एन दिस बिकम द रिपीट यूनिट। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम रिपीट यूनिट टू मोनोमर, कुछ भी नहीं करना, just write these two carbons as it is, write Cl H H H, ब्रैकेट और n खत्म कर दीजिए and place a double bond here, so this become the monomer. Okay, so a very easy method to convert a polymer to a repeat unit, ठीक है, and from a repeat unit to a monomer. सही बेटा, and this is example, this is basically the example which is called PVC, polyvinyl chloride. ठीक है, so this is basically a polymer which is polyvinyl chloride and this is the monomer of PVC. Monomer of PVC. Now you can use this example as a polyvinyl chloride which is another form of a plastic. As I said, polyethylene, polypropylene, polybutene, जितने भी polyalkenes आपके पास हैं, और PVC is an example of plastic. PVC normally used in वाटर पाइप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, ठीक है, सेवरेज पाइप्स में नॉर्मली सेवरेज के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो मस्ट नो द रिपीट यूनिट, सॉरी, मोनोमर ऑफ पीवीसी. दिस इज एन एल्कीन, इथीन ही होता है, इंस्टेड ऑफ वन हाइड्रोजन यू हैव वन क्लोरीन प्रेजेंट, ठीक है, इथीन ही की तरह होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पर यू हैव वन क्लोरीन प्रेजेंट. सही बेटा. नाउ as I said कि addition polymers are all the examples of a plastic. Addition polymer की सारी examples क्या है? Commonly called the plastic material. And for plastic which is polyethylene, plastic which is polypropylene, polybutene, or even a polyvinyl chloride, which is this one, have some issues. ठीक है? तो important बात क्या है? Important बात ये है कि plastic, the use of plastic, ये important बात है बेटा, ठीक है? environmental issues. ठीक है. Number one, the major issue. This is non-biodegradable. Plastics are non-biodegradable. It cannot decompose in soil or in water. ठीक है. Second, insoluble in water. ठीक है. Biodegradables normally soluble होती हैं, तो non-biodegradable are basically insoluble in water. Combustion of plastic produces harmful gases. ठीक है. That is mainly the carbon monoxide gas is being released. ठीक है. And if we have polyvinyl chloride जो है वो acidic PVC produce acidic gas. ठीक है. Produces acidic gas क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है नॉर्मली फ्यूम्स फॉर्म में. ठीक है. क्लियर है. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज थ्री इश्यूज के दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, insoluble in water, and on combustion they produce harmful gases. The disposal of, or to dispose of plastic is a major issue.
See, we cannot dispose of plastic either by just dumping it into a water or in the soil by because insoluble है, non-biodegradable है, or by burning it. ठीक है? Clear? So the disposal of plastic material have some serious environmental issues. That's why normally we discourage the use of plastic. ठीक है? The only solution is to recycle. ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, हम प्लास्टिक को वी ट्राई टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ दीज पॉलीमर, बट अगर हमें यूज करना भी हो तो वी ट्राई टू रिसाइकिल इट रेदर देन जस्ट dumping it into an ice or something. That's why these polythene bags or plastic bags are never encourages, and we normally use the paper bags instead. ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ पर एक इशू आता है. लेट्स स्टार्ट विथ सम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, देखिए, alkenes are made in an oil refinery by cracking hydrocarbon. The structure of propene is shown. Deduce the partial structure of polypropene to show three repeat units. Now, as you can see, we've done this one in a lecture. These are the two carbon bonded to a double bond. So you have to write these two carbons. The first carbon, which is this one, contain one hydrogen and one CH3. तो हमने यहाँ CH3 लगाया यहाँ. You can write CH3 as like this as well. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे. Hydrogens. This is one repeat unit. And if I read the question carefully, it clearly shows that says that we have to show how many repeat unit. We have to show repeat unit number, three repeat units. So one repeat unit, two repeat unit, three, six carbon. Okay, so we'll get all 2 marks for this one. So that's how easy it is. In experiment, cracked molecule produce a quick streakage in a product B molecule formula and decolorized bromine. No. Okay. Deduce the structure of product C. Product C can be polymerized to give the कोई भी product C previous part में बन रही है, ठीक है? You are provided with a repeat unit, है ना? आपको एक repeat unit provide कर दिया गया है, and they asking you about the product C previous part की product, which is they asking about the monomer. सही है? They asking you about the monomer of it. So देखिए, these are the two carbon bonded to a double bond. मैंने इन दो carbon को लिखा. First carbon contain two hydrogens. The second carbon contain one hydrogen and one CH3. ये bracket सब खत्म किया and I place a double bond here. Okay, so that's how you draw the repeat unit. These are the example of a condensation polymer. Okay, now a sample of wastewater include plastic and a copper. One of the plastic is addition polymer of polychloroethene. This is basically PVC. Okay. Complete the equation to show the formation of polychloroethene. आपने सिर्फ एक काम करना है, you have to write down the monomer of it. सही है? जब भी इस तरह लिखा हुआ हो तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पर आपको मोनोमर लिखना है. सही है? कैसे लिखेंगे बेटा? These are the two carbon bonded to a double bond. So हमने इन दो कार्बन को ऐसे लिखा. The first carbon contain one chlorine and one hydrogen. The second carbon contain one hydrogen, one hydrogen. Now ये ब्रैकेट सब खत्म कर देंगे and place a double bond here. सही है? And as you can see, it's clearly say N here, तो आप यहाँ पर N लिख दें. ठीक है? N molecules of this monomer react. Plastic waste is disposed common problem. ठीक है जनाब. देखिए,
मोनोमर कंटेन क्या चीज है? हाइड्रोक्लोरीन है, तो आप देखें हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। बहुत आसान है, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ तीन है, एंड देन यू कैन इजिली बैलेंस दिस। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा formation of acid rain because it produces HCl which is acidic in nature. Okay, so just why combustion of polychloroethene contribute to the formation of acid rain because it produces hydrogen chloride gas which is acidic in nature. ठीक है बेटा, देखिए कंप्लीट द इक्वेशन बाय ड्राइंग पार्शियल स्ट्रक्चर। पार्शियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यू हैव टू शो द रिपीट यूनिट। ठीक है, पार्शियल स्ट्रक्चर का मतलब यू हैव टू शो द रिपीट यूनिट। पहले से पार्शियल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है कुछ जगहों पे। सो यू हैव टू शो द रिपीट यूनिट। नाउ दीज आर द टू कार्बन्स बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। यहाँ लाइन लगाइए, यहाँ ब्रैकेट लगा। फर्स्ट कार्बन हैज वन CH3। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग CH3, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। And then you have one hydrogen. The second one contain one hydrogen and one. Okay, so this is basically the repeat unit, which is called the partial structure of this. सही है, तो इस तरह के कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होंगे। ओके, दिस वन, draw the partial structure for polyethylene, you must show at least two repeat unit। partial structure में दो repeat unit शो करने का बोल रहा है। अगर partial structure में कोई repeat unit शो करने का नहीं कह रहा तो आप एक शो करेंगे, ठीक है। so these are the two carbon bonded to a double bond। so आपने two carbon लिखे, the first carbon contain CH2 and then CH3 और नीचे क्या लगा है? हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन पे you have to, this is one repeat unit and you have to show the two repeat unit। तो आपने CH2 लगाया, CH3 लगाया, and then hydrogen, CH, and then H, and then you have to break place them। ठीक है, आई हैव शोन टू रिपीट यूनिट फ्रॉम दिस। मुझे बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दीजिए। Let me just see one more question पे condensation की definition देख लेते हैं। What is meant by the term addition polymerization? The joining up of two or more unsaturated or alkene molecule to make a macromolecule। यहाँ पर आपके पास अभी जो हमने definition लिखी है, you can write the same definition here। ठीक है, draw the structure of the alkene that can be used to make this addition polymer। कौन सा addition polymer? This is the addition polymer। देखिए, now you have to write down the structure of an alkene। So select any random two carbons। okay, so मैंने ये दो carbon select किए। both of these carbon contain all these CH3। CH3 लगा दिया और यहाँ डबल। यू कैन राइट इट एज इट इज, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई, और यू कैन राइट इट लाइक दिस CH3, देन यू हैव C डबल बॉन्ड C CH3। ठीक है, यहाँ एक CH3 लगा दीजिए और यहाँ यू कैन राइट इन बोथ वेज। बट आई थिंक टू अवॉइड द कंफ्यूजन इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस। इसी शेप में रखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज इन दिस शेप you might make any issue or any problem by placing wrong hydrogens or something else। ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक कि इस तरह से इसको करना ज्यादा आसान है। ठीक है बेटा, डिस्क्राइब वन पॉल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ दिस एडिशन पॉलीमर। ठीक है, बहुत सारे हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इट्स कंबस्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। ठीक है ना, पॉल्यूशन से रिलेटेड बात करनी है, डिस्पोजल से। तो इफ यू डिस्पोज इट ऑफ बाय बर्निंग तो इट्स कंबशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। मेन है प्लास्टिक का, अगर डिस्पोज ऑफ से रिलेटेड इशू पूछा जाएगा तो आप ये लिख देंगे इसकी कंबशन प्रोडक्ट से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्लियर। दिस इज वी हैवंट डन दिस वन येट।
ना ये किया है अभी हमने। ओके, गुड क्वेश्चन। Compound A undergo two types of polymerization. Yes, it has these group present, so it can go. अभी हम आगे पढ़ेंगे condensation polymerization. It has a double bond present, so addition polymerization. Name the two types of polymerization. So yes, you can write addition polymerization, and second one is condensation. ठीक है। अब वो कह रहा है कि फॉर वन ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ड्रॉ अ सेक्शन ऑफ द पॉलीमर टू शो टू रिपीट यूनिट, मिनिमम टू रिपीट यूनिट शो करने होते हैं दैट सेड। सो कोई भी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, सो वी हैवंट डन द कंडेंसेशन येट, सो लेट्स डू द एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो दीज आर द टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां से लाइन लगाई। द फर्स्ट कार्बन हैव वन हाइड्रोजन, वन सी डबल ओ एच, जो कुछ लगा है वैसे ही रहेगा। द सेकेंड वन हैज वन ओ एच एंड वन, this is one repeat unit. Write it again. One hydrogen, C double OH. Second hydrogen and with OH. And place N. Okay. So this is the two repeat unit that I have shown for this type of polymerization. देखिए इसमें आपको पुराने बास पेपर में यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ अ नायलॉन। we we can do the nylon, or sorry, example of a terylene, we can do the terylene as an example of a condensation polymerization। ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ सकते, इट्स सेम एज नायलॉन, सो हमें सिर्फ इसको एक दफा समझना है। वैसे जो हमें पीईटी पढ़ना है दैट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बिल्कुल नायलॉन जैसी ही एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। Structure of chloroethene is shown. Draw the part of a section of a structure of the polychloroethene. दो repeat unit show कर दीजिएगा, part of a structure की बात कर रहा है। ठीक है, so you can see one, two hydrogens, one hydrogen, one chlorine। ठीक है, and then you have H, you have one hydrogen and one chlorine। ठीक है, this is the answer for this one। चल बाकी हम पांच पेपर इसके बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसकी डेफिनेशन ले लेते हैं और लेट्स डू द एग्जांपल फॉर दिस वन, दैट बेसिकली कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, द जॉइनिंग अप ऑफ टू और मोर, नॉर्मली एडिशन पॉलीमराइजेशन में वी हैव द सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, यानी इथीन है तो सारे इथीन होंगे, लेकिन कंडेंसेशन में आपके पास डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, एक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो द वन इज एल्कीन, मेनली ज्यादातर के सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो द जॉइनिंग अप ऑफ टू और मोर different monomers to make a polymer। ठीक है, अब डेफिनेशन इज मोर लेस सेम एज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है विच इज दिस वन, विद द एलिमिनेशन ऑफ और with the removal of water molecules। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की जगह इट कुड बी एनी स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O or HCl, any small molecule can be eliminated depending on कौन सा मोनोमर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन ओ लेवल्स में वी नॉर्मली यूज द टर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस डेफिनेशन इज परफेक्ट। ठीक है,
क्लियर? तो दिस इज बेसिकली नाउ द कंडीशन। आपको पता है जैसे हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की कंडीशन थी दैट यू मस्ट हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट। फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन the presence of carboxylic acid group which is COOH, the presence of alcohol which is OH, and the presence of NH2 is compulsory. ठीक है? For condensation from polymerization, the presence of OH group, the presence of COOH group, or the presence of NH2 group is compulsory. ठीक है? NH2 यानी आपके पास अल्कोहल होना चाहिए, यानी आपके पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होना चाहिए, आपके पास दीज आर कॉल्ड बेसिकली अमाइंस, अमाइन होने चाहिए। ठीक है? तो दीज थ्री, इनमें से कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है? एनी टू ऑफ दीज, यानी अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमाइंस। ठीक है? एक बार यहाँ पर मार्क करके लिख लीजिए। एनी टू ऑफ दीज। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ओ एच with COOH, NH2 with COOH। हाँ, OH और NH2 का मतलब ये दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो OH प्रेजेंट हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2 प्रेजेंट हो। अगर आपके पास OH के साथ NH2 प्रेजेंट है तो ये पॉलीमर नहीं फॉर्म करेगा। सही है? क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि द कंपल्सरी प्रेजेंस दो ग्रुप्स की है इनमें से कोई। ठीक है? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर OH के साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंस है तो इट वोंट मेक एनी कंडेंसेशन पॉलीमर। आपके ए ओ लेवल्स में यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब नोट करके एक लास्ट बात कर लेते हैं। पहली बात कि in condensation polymer either a ester or a amide linkage is present। ठीक है? either a ester और amide linkage is present। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एस्टर लिंकेज क्या है और अमाइड लिंकेज क्या है। तो बेसिकली द एस्टर लिंकेज इज बेसिकली इज दिस वन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। ठीक है? और इनसे जो पॉलीमर बनते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड पॉली एस्टर्स। पॉली बहुत सारे, एस्टर्स का मतलब एस्टर ग्रुप। एंड देन यू कैन हैव अ अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज इज सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज। और इनसे जो पॉलीमर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड पॉली एमाइड्स। ठीक है? सो यू शुड नो दैट पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं। तो अमाइड लिंकेज एंड पॉलीएस्टर लिंकेज। ठीक है? क्लियर? सो आखिरी बात इंट्रोडक्शन में दोबारा से रिपीट करता हूँ। कंडेंसेशन पॉलीमर्स द जॉइनिंग अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है? टू मेक अ पॉलीमर विद द रिमूवल ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन।
A smaller molecule mainly O levels में water होता है, but it could be HCl as well. For condensation polymers, any two of these with the carboxylic acid के साथ या तो OH present हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2 प्रेजेंट हो. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH होगा तो पॉलीएस्टर बनेगा. इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड विद NH2 तो यू हैव अ पॉलीएमाइड फॉर्म. क्लियर? वो अभी आगे नजर आ जाएगा. बट द कम्बिनेशन ऑफ OH एंड NH2 कोई नहीं. या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2. अब मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ. यहाँ पर आपके पास बनेगा पॉलीएमाइड. ठीक है. और यहां आपके पास बनेगा पॉली एस्टर. और यहां बनेगा पॉली एमाइड. ठीक है. क्लियर? तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2 होगा तो एस्टर लिंकेज एमाइड लिंकेज आपके पास क्लियर हो गया. आखिरी बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक. ठीक है. मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ. जैसे कि you have a form of a plastic which is called nylon. ठीक है. Nylon is an example of a synthetic polymer. In a similar way, protein is an example of a natural polymer. Although they both are basically polyamide. They both are polyamide, लेकिन एक हम खुद बनाते हैं और एक नेचुरली बनता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज. ठीक है. और इसको हम डिटेल में कवर अप करके वी डन विद द polymerization and then we do some past paper और फिर उसके बाद organic और polymerization complete हो जाएगा. If you have any question you can ask.